This is illustration 3 from your Annu, Renu and Dinu. So these are the name of your partners. Is as follows. The partners are sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. So this is a profit sharing ratio 2:2:1. So balance sheet as on 31st March 2019 is provided to us, wherein we have been given creditors. Creditors jayega liability, bills payable liability, general reserve. Now we know general reserve is distributed among the partners in profit sharing ratio. So partners capital account के credit side में we will be distributing among the old partners in their profit sharing ratio. ठीक है? Then capital account of the partners will go to partners capital account credit side. Okay? And on the asset side we have first bank balance. So bank balance will go to bank account as an opening balance. Then we have debtors less RDD, और debtors और RDD जैसा है वैसा हम लिखेंगे. Asset side में RDD पे अगर कुछ adjustment होगा, so we will be writing the RDD in the inner column in a bracket. ठीक है? Furniture assets, machinery assets, freehold property assets, and dear students, in this sum goodwill is appearing in the balance sheet. Is that clear? So goodwill, if it is appearing in the balance sheet, then first we will be writing it in the asset side, on the asset side, और फिर देखेंगे एडजस्टमेंट में गुडविल को रीवैल्यू किया है क्या. मतलब गुडविल का अभी फिलहाल वैल्यू 30,000 का है. इफ दे आस्क अस टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल तो हम इंक्रीज करेंगे. समझो गुडविल बोलेंगे 50,000 रखो, सो विल बी इंक्रीजिंग द गुडविल बाय 20,000. अगर गुडविल 10,000 करने बोलेंगे, दैट मींस वी विल बी राइटिंग बैक द गुडविल बाय 20,000. सो व्हाटएवर द थिंग इज वी हैव टू do as far as goodwill is concerned. So let's see what we have to do further. Dinu retires from the firm. So Dinu is a retiring partner on 1st April 2019 on the following terms. So terms of retirement are given to us. The assets are to be revalued as freehold property 30,000. Freehold property 30,000 करना है. So I'm putting a tick mark on freehold property. Machinery 5,000. Machinery पे tick mark. Furniture 12,000. Furniture पे tick mark. एंड यहाँ पे बोला ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट देयर इज नो नीड फॉर प्रोवाइडिंग दिस आरडीडी. यानी आरडीडी रखने का जरूरत नहीं है. तो आई एम पुटिंग अ टिक मार्क ऑन आरडीडी क्योंकि ऑलरेडी आरडीडी है तो उसे मुझे निकालना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सो आई हैव टू डू एन एडजस्टमेंट ऑन आरडीडी. मुझे उसको नील करना है. दिस इज व्हाट इट मींस. ऑल डेटर्स आर गुड. सो इन ऑर्डर टू मेक आरडीडी नील I will be putting a tick mark on RDD और वहां से मैं 1000 डिडक्ट करने वाला हूं. ठीक है? Then dear student, as far as goodwill is concerned, goodwill तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है at ₹30,000. फिर उन्होंने यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए क्या बोला है? सो गुडविल का डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया कितना वैल्यू करना है आपको. आपको कैलकुलेट करने बोला है. कैसे? द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट. थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 5 years. प्रीसीडिंग 5 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है थ्राइस उसका. ठीक है? प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर्स यानी 5 साल का हमें प्रॉफिट दिया है. सो वी हैव टू वैल्यू गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके, सो दैट वी विल बी डूइंग एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. देन Dinu should be paid ₹3,000 by cash. Dinu is a retiring partner, so at the time of retirement he will be paid ₹3,000 by check. So Dinu will be paid ₹3,000 by check. यानी बाकी का जो भी उसका अमाउंट पे करना है, तो जैसा बोला है द बैलेंस ऑफ Dinu's account should be kept in the business as loan. So remaining amount of Dinu's capital account will be kept as his loan. ठीक है? So that will be finding out कि how much amount we have to keep as Dinu's loan when we close Dinu's capital account. ठीक है? Now, profit and loss adjustment account, capital account of partners, and balance sheet of the new firm. This is what we have to do. First, let's post the things. Creditors. So first we have creditors 8,000. We don't have a tick mark on creditors, तो creditors जाएगा liability side में. Outer column 8,000 creditors. ठीक है? After creditors we have bills payable 2,000. चलो bills payable 2,000. Okay, then bills payable के बाद we have general reserve 5,000, but general reserve is to be distributed among the partners.
that will be distributing in the second line. First we'll be writing the balances of the partner. So Annu 40,000, Renu 30,000 and Dinu 15,000. So 40, 30 and 15,000 are the balances of the partners. So by balance brought down 40,000, 30,000 and 15,000. Clear? Chalo. Then dear students, we have general reserve to be distributed among the partners. The value of general reserve is 5,000. So general reserve will be written on the credit side by general reserve. 5,000 ka general reserve to be distributed among the three partners, and the ratio of distribution is 2:2:1. बराबर है? चलो. So let's distribute general reserve 5,000 का. टू इज टू वन के रेशियो में अन्नू, रेनू एंड दीनू. बराबर ना? यही है ना? रेनू अन्नू दीनू है कि अन्नू रेनू दीनू है? बराबर. अन्नू, रेनू एंड दीनू. ओके. एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 5,000. सो 5,000 इंटू यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट 2 बाय, ये टोटल होता है 5, 2 बाय 5. देन रेनू के लिए आएगा 5,000 इंटू अगेन 2 बाय 5. रेनू का भी 2 का शेयर है. एंड दीनू के लिए विल बी 5,000 इंटू 1 बाय 5. ठीक है. सो लेट्स डिवाइड दिस विद 5. तो ये 1 जा आएगा, 5 1 जा एंड 5 1 जा. तो यहाँ पे 1,000 आ रहा है. 1,000 इंटू 2 विल बी 2,000. दिस विल बी ऑल्सो 2,000 एंड दीनू को क्रेडिट होगा 1,000. सो टोटल इज 5,000. So this is the distribution of goodwill among the three partners in their profit sharing ratio. ठीक है. चलो क्रेडिट करते हैं in their accounts. So 2,000 will be credited to Annu, 2,000 will be credited to Renu, and 1,000 of the general reserve will be credited to Dinu. I hope this is clear. Okay. So after completing the posting of liability side, let's move on to the asset side. Asset side का first item is bank balance. So bank balance we will be writing as a opening balance in our bank account. 5,000 is the bank balance that we have. So bank account में to balance brought down 5,000. That's the opening balance that we have. बराबर है. Then dear students, bank balance के बाद next stuff जो हमारे पास है वो है हमारा debtors. Debtors 20,000 less RDD 1,000. So RDD फिलहाल हम दिखाएंगे डियर स्टूडेंट्स 1,000 का, लेकिन सब्सिक्वेंटली एडजस्टमेंट में बोला है द डेटर्स आर गुड, सो देयर इज नो नीड टू कीप दिस RDD. तो सब्सिक्वेंटली वी विल बी कैंसिलिंग दिस RDD एज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट. ठीक है. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू शो द RDD एज दे हैव शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. चलो डेटर्स 20,000 लेस RDD 1,000 will be showing it in a bracket. Bracket close करता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रख देता हूँ. ठीक है. So that we can have a net effect of debtors. चलो, this is how we usually do. Then we have furniture 15,000. Furniture also has got a tick mark. Machinery 4,000. Machinery पे भी tick mark है. So we have furniture 15,000. It's got a tick mark, so I am writing it in the inner column. Then dear sir, furniture के बाद we have machinery. Machinery 4,000. So machinery I will be writing it in the inner column once again. 4,000. Machinery के बाद we have freehold property. Freehold property 27,000. That is also to be written in the inner column. And then we have goodwill as well. In this sum we have goodwill. So Risha, I'm going to write goodwill in the inner column. Goodwill also in the inner column. Goodwill पे भी tick mark है dear student. And goodwill पे tick mark क्यों है? Because in the second adjustment they have asked us to revalue goodwill. So I'm putting a tick mark on goodwill. 30,000 का goodwill है. So dear student, let's put a tick mark on goodwill and let's write goodwill over here. Whenever goodwill is in the balance sheet,
तो हम उसको एसेट साइड में लेके आएंगे। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन का 30,000 का गुडविल है हमारे पास, ठीक है। Now, dear sir, as far as this sum is concerned, there is no need for a goodwill account in this sum. The reason being, dear students, goodwill is already appearing in the balance sheet, so we have taken the goodwill directly to asset. So there is no need for an account as such. But so वो account जो मेरा format में हो मैंने लिखा है, लेकिन मैं उसमें कोई entry नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बस goodwill मैंने directly asset में लिखा है. This is about the posting part. Now, once we have done with the posting part, the next thing is to do the adjustments. ठीक है, adjustment में सबसे पहला we have to revalue freehold property by rupees 30,000. बराबर, freehold property को 30,000 revalue करना है. Freehold property is 27,000, so we'll be making it 30,000. And in order to make freehold property 30,000, we have to appreciate. पापा का नाश्ता पापा को So appreciation of 3,000, so that freehold property will be 30,000. The second effect of appreciation will go to revaluation account के credit side में, क्योंकि हमने asset का value बढ़ाया है by freehold property. $3,000. I hope this is clear. ठीक है. Then after freehold property we have machinery rupees 5,000. चलो machinery को 5,000 revalue करना है. Let's see what is the value of machinery. Machinery का value 4,000 है, so we have to make it 5,000. In order to revalue it 5,000, we'll be appreciating the value of machinery. So appreciation of 1,000. The second effect of this appreciation will go to once again revaluation account के credit side में buy machinery 1,000. ठीक है. Then machinery के बाद we have furniture to be revalued to 12,000. तो furniture 12,000 करना है हमें. Furniture is 15,000, so we have to revalue it at 12,000. तो हम furniture को depreciate करेंगे. Less depreciation. ये 3,000. टॉयलेट पोजीशन We have deducted Toilet depreciation from the value of furniture. The second effect will go to revaluation account के debit side में to furniture 3,000. ठीक है. I hope this much is clear. Then the student they have given all datas are good. All datas are good का मतलब होता है there is no need to maintain any RDD. I hope this is clear. Because all datas are good, so no need for maintaining any RDD. This is what it means. So if there is no need for maintaining any RDD, तो what we will be doing? जो already RDD आपने रखा है ना 1,000 का, उसको आप क्या कर दोगे? Deduct कर दोगे. So you will be removing this RDD which is already been kept in the books, 1,000 का RDD. And once you are removing this RDD, so dear student, there won't be any RDD. And the datas will be valued at 20,000. That means all datas are good. देखो dater का value 20,000 का ही आएगा outer column में. Understood all of you? So whenever they say they all datas are good, they should do remember whatever RDD you have provided that you will be deducting. Okay? So since you have deducted RDD, dear student, this is a gain for you. जब भी RDD का value को आप कम करते हो ये bracket में, आपके लिए वो gain बताना पड़ता है. और अगर gain है तो आप revaluation के credit side में दिखाओगे by RDD. बिकॉज आपने आरडीडी को बढ़ाया नहीं, आपने आरडीडी को कम कर दिया और वो भी पूरा 1,000 कम कर दिया. क्लियर विद दिस? देन इन द सेकंड पार्ट दे हैव आस्क्ड अस टू calculate the value of goodwill. So there we have to do a valuation of goodwill by average profit method. The profit that we are going to consider is for last 5 years and number of years purchase that we are going to consider is thrice. तो 3 years का purchase हमको करना है. ठीक है. Let's do the calculation. So working note number 2, valuation of goodwill. ठीक है. As far as valuation of goodwill is concerned, first we calculate total profit
That is the first point that we calculate total profit. Total profit is that we have to calculate is for is by adding the profits given for last 5 years. So chalo, let's add the profit given for last 5 years. So 1000 plus 10,500 will be 11,500. बराबर है 11,500 plus 10,000 will be 21,500. 21,500 plus 10,000 will be 31,500. 31,500 plus 16,000 will be 41,500 and 47,500. If I'm not wrong, the total is 47,500. That is the total profit for last 5 years. Am I right, students? Have anyone calculated it? Yes, sir. Okay. So then we are going to calculate the average profit. बराबर है? So total profit 47,500 is for 5 years. This is the total profit for 5 years, dear students. And since this is for 5 years, we are going to divide it with 5 in order to get the average profit. So 47,500 is going to be divided with 5. So the average profit is going to be equals to 9,500. 1,003. Okay, that's your average profit, 9,500. And yes, student, the next thing is to calculate goodwill. So the formula for calculation of goodwill is goodwill will be equals to average profit into number of years of purchase. बराबर है? So average profit is 9,500 into number of years of purchase is considered as 3. We have to take it as 3 क्योंकि उन्होंने बोला thrice the number of years of thrice the average profit बोला, इसलिए 3 ले रहे हैं. Into 3 जैसा ही करेंगे. So the goodwill is going to be 28,500 का. I hope this is clear. So the value of goodwill that we are arriving at is 28,500. Clear with this? Valuation समझा? ये तो हमने पहले भी किया था. एडजस्टमेंट कैसे करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल तो हमने देखा 28,500 आ रहा है. दैट मींस डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन करने के बाद गुडविल को अगर 28,500 रखना है, इज दैट क्लियर? दैट मींस डियर स्टूडेंट्स, हमें गुडविल में से डिडक्शन करना पड़ेगा. रिटर्न ऑफ बोलेंगे हम उसे. हमें गुडविल में से राइट बैक करना पड़ेगा. कितना वैल्यू हमको राइट बैक करना पड़ेगा? सो डियर स्टूडेंट, वी हैव टू राइट 1,500. बराबर है. In order to make the value of goodwill 28,500, since we have seen कि goodwill is valued at 28,500, so in order to make the value 28,500, we will be deducting a value of, हमें उसे भी revaluation करना है, we will be deducting a value of 1,500 from it. ये समझा क्या? Understood all of you? Yes, sir. अब क्या करेंगे dear student? The second effect of this, it been goodwill. जैसे नॉर्मल एसेट्स, अगर बाकी कोई एसेट्स होता था तो हम सेकंड इफेक्ट किधर लेके जाते हैं इसका? जैसा हमने कोई भी एसेट कम किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में लिखते हैं. बराबर है कि नहीं? Revaluation डेबिट account. में लिखते हैं. लेकिन ये गुडविल होने के कारण हम इसका इफेक्ट लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे. Partners capital. So instead of writing it in revaluation debit, we will be writing the same in partners capital account debit, because this is a revaluation that we have done on goodwill. So goodwill का होने के कारण हम डायरेक्टली उसे पार्टनर लिखेंगे. Is that clear? और कम की इसीलिए मैं डेबिट में लेके जाता हूं. और अगर मैं गुडविल का वैल्यू को बढ़ाता था, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहां पे लेके जाता था उसे? क्रेडिट साइड में लेके जाता था. Is that clear? Okay. चलो. So what is the value of goodwill? 1,500. 1,500 का हमें एंट्री करना है, लेकिन that 1,500 is to be now distributed among the 3 partners. बराबर है? क्योंकि no one partner will bear this. This will be borne by all the 3 partners in the profit sharing ratio, which is 2:2:1. I hope this is clear. So चलो distribute goodwill. Valuation तो हो गया. So return off of goodwill. In the ratio 2:2:1.
ठीक है dear students, the value of goodwill is 1500 and that is to be write back among three partners, Annu, Renu and Dinu. So 1500, 1500 and 1500 into 2 by 5. This will be 2 by 5 and this will be 1 by 5. 5 से divide करेंगे. 5 300. 300 into 2 will be 600. This will again be 300. 300 into 2 will be 600. And dear student, this will be 300. Is that clear? So the goodwill is distributed as 600, 600, 300. So चलो value debit करते हैं partners में. 600, 600 and 300. I hope this is clear. Understood all of you? So we have a goodwill. Goodwill is to be valued at 28,500 that we have calculated, but the goodwill is already appearing in the balance sheet at 30,000. So what we have done, जो 30,000 था उसमें से 1,500 रुपए हमने डिडक्ट किया गुडविल में से, और जो डिडक्ट किया उसका सेकंड इफेक्ट हमको डेबिट साइड में देना था, और डेबिट साइड में हमने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में हमने गुडविल को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, वो भी बता देता हूं आपको. हमने क्या किया, हम गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाते हैं बिकॉज इट इज एन एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू गुडविल, सो हम डायरेक्टली पार्टनर्स में लेके जाते हैं. बट देयर इज अ सेकंड पॉइंट टू इट. आप गुडविल का जो एंट्री है वो बाकी एसेट्स की तरह, जैसे बाकी एसेट्स आप क्या कर रहे थे, जब भी बाकी एसेट्स को आप डिडक्ट करते थे, बाकी एसेट्स में से आप कोई भी वैल्यू कम करते थे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स के डेबिट में या रिवैल्यूएशन के डेबिट में लेके जाते थे. तो आप ये भी वैसा ही कर सकते हो, यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुडविल in the debit of partners capital account, there is another way, and the another way is, dear students, you can write this value of goodwill in revaluation account. revaluation में भी हम लिख सकते हैं to goodwill, and अगर revaluation में लिख लिया तो हमें किसी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, डायरेक्टली we are going to write 1500. Is that clear? Dear students, कुछ भी करो, the effect is going to be same. दोनों का effect same ही आएगा पार्टनर्स के लिए. Why? Now dear student, the reason देखते हैं. देखो, for example, अगर यहाँ पे हमने 1500 का गुडविल लिखा तो क्या होगा, हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन जो भी प्रॉफिट आने वाला है वो थोड़ा 1500 से कम आएगा, और वही प्रॉफिट हम कहां पे लेके आने वाले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके आने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. सो यू कैन राइट द गुडविल आइदर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, or you have a choice of writing the goodwill directly to revaluation account. Okay, that's the choice been given to you, but I always prefer writing goodwill in partners capital account. So dear, so I have chosen this point and I have written goodwill in partners capital account. I hope this is clear. Okay, I have made a choice of writing it in partners capital account. I am deducting goodwill from revaluation account debit. But you have a choice, dear students. You can either write in partners capital account or else you can write it in revaluation account as well. Okay. This is all about goodwill for this sum. Then let's proceed ahead. They have said that Dinu should be paid rupees 3,000 by check. Now dear students, Dinu का check में हमको 3,000 rupees pay करना है Dinu को. चलो pay करते हैं. Anything that is to be paid, we'll be taking it to bank account के credit side में by Dinu's capital. Dinu को pay करना है इसीलिए by Dinu's capital 3,000 pay करेंगे. And yes, the second effect of this will go to capital account के debit side में to bank, and we will be writing it in Dinu's account as 3,000. That is the payment made to Dinu. Clear? And final entry is, dear students, the balance of Dinu's capital account should be kept in the business as loan. So dear student, what is the balance of Dinu's capital account? That we will be finding out only when closing the capital account of Dinu. And for that, first we have to close revaluation account. Any profit or loss on revaluation should be taken to capital account. Then only we are in a position to close the account of retiring partner. Okay? So let's do that first. Let's close revaluation account and let's calculate the profit or loss that's arising on revaluation. Okay. So as far as revaluation account is concerned, I am finding the credit side to be higher, and credit side ka total is 5,000.
The same amount I'm going to write it in the debit side, 5,000. Debit side already we have 3,000. So the balancing figure is going to be 2,000. 2000. बराबर है? And this 2,000 is to be distributed among the three partners. So two partners capital account in their old ratio. ठीक है? So partners capital account में किसका किसका नाम आएगा? रेनू, नहीं अन्नू, रेनू and दीनू. बराबर है? Now this is nothing but your revaluation profit. बराबर है? So this is your revaluation profit. चलो let's distribute revaluation profit of 2,000 in their old ratio. So next working note is distribution of revaluation profit in the ratio 2:2:1. That is their old ratio. Annu, Renu and Dinu. The revaluation profit that we have is 2,000. So 2,000 into 2/5. For Renu also it is 2/5 and for Dinu it is 1/5. So this will be 5 4s are 20. So 400 into 2 will be 800. Same, this will be 400. 400 into 2 will be 800. And this will be 400 into 1 will be 400. So the division is 800, 800 and 400. Total बराबर 2000 का हो रहा है. ठीक है? So Annu 800, Renu 800 and Dinu 400. ठीक है? Let's bring this revaluation profit to partners capital account, and partners capital account में वो credit हो जाएगा because there's been a profit. So partners capital account में credit करता हूं by revaluation account. Annu 800, Renu 800 and Dinu 400. Is that clear? Okay. Chalo. Now dear students, we are in a position to close the capital account of retiring partner because all the adjustments are done. Okay? Even we have distributed the revaluation profit to all the partners, so we can close Dinu's capital account. Let's do that first. So I am finding the credit side to be higher. 15,000 plus 1,000, 16,000 plus 4 will be 16,400. Okay? The same amount I'm going to write it in the debit side, 16,400. As far as debit is concerned, dear student, the total of debit is 3,300. बराबर ना? 3,300 है. तो what I'm going to do? 16,400 में से 3,300 को मैं deduct करूंगा. Okay? So 0, 0, 1, 6 में से 3 गया 3 and 1. So this amount of balance is going to be 13,100. So let me write it over here. 13,100 is the balance that is there in Dinu's capital account. And Dinu being retiring partner, उसका जो भी बैलेंस है वो हमें लोन में ट्रांसफर करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू Dinu's लोन अकाउंट. ओके? और जैसे हमने बोला Dinu's लोन अकाउंट, इसका सेकंड इफेक्ट विल कम टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, क्योंकि लोन है तो यहाँ पे एक नया आइटम क्रिएट हुआ ये बैलेंस शीट में, Dinu's लोन अकाउंट. तो जब तक हम लोग Dinu का लोन अकाउंट का पेमेंट नहीं करते, till that period this loan account will continue as a liability. Okay? 13,100 का लोन आया है Dinu का. ठीक है? चलो. Then dear students, after finding out the loan amount of Dinu, we will be closing the rest part account of remaining partners. ठीक है? So चलो, उनका भी credit side is बड़ा दिख रहा है मुझे. So 32,000 plus 800, this will be 32,800 and 42,800. Okay. Chal. So 32,800 and 42,800 are the total amount of your Renu, Annu and Dinu. Then dear the same amount I am going to write it on the debit side, 42,800, 32,800. ठीक है? Let's deduct the debit का total, that is 600. दोनों का भी 600 है.
तो अगर यहाँ पे 32,800 में से डियर स्टूडेंट्स 600 को अगर हमने डिडक्ट किया तो कितना बचेगा? 32,200 बचेगा, क्योंकि 800 में से 600 गया ना, 200 बराबर है। 200. अन्नू का 42,800 है, उसमें से अगर 42,200 आएगा अन्नू के लिए। And this is the capital balances of your continuing partners. So two balance carried down, and balance carried down will go to liability side में as partners capital account. ठीक है, so अन्नू का capital account balance is 42,200. रेनू का capital account balance is 32,200. So the total capital balance is 400, or 4, and this will be 7. So it will be 74,400. Clear? Okay. Chalo. Next thing is, dear students, we have to close the remaining accounts. And remaining account में in this sum there was nothing to be entered in goodwill account. मैंने बोला था goodwill is already appearing in the balance sheet, तो हमने डायरेक्ट बैलेंस शीट पे उसका एंट्री कर लिया. तो गुडविल अकाउंट में कुछ भी नहीं है हमारे पास. सो बैंक अकाउंट जाके हम क्लोज करते हैं. तो बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज था इनिशियली, एंड 5,000 में से हमने अन्नू को 3,000 रुपीज पे किया. सो डियर 5,000 में से 3,000 रुपीज अन्नू को पे करने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचा रहेगा? सो बैलेंस दैट इज 2,000. ठीक है, बाय बैलेंस carried down 2,000 rupees is left after paying Annu rupees 3,000. ठीक है, so that balance I'm going to take it to balance sheet asset side as bank balance 2,000. Clear? चलो, let's total the balance sheet. So I'm totaling the liability side first. लायबिलिटी साइड का टोटल इज 74,400 प्लस 97,500. 10,000. So that's going to be 97,500. Okay. Let's total the asset side. 12,000 plus 5,000 plus 30,000 plus 20,000 plus 28,500 plus 2,000. So the total of asset side is also 97,500. So that means our balance sheet is tallying.